Okay, so we will continue standard first 1.4. The lesson name is Let Us Read. Now here is given listen, read and write. So what we have to do, first you listen this very carefully how to sound it, and then read it and then write it. Okay, in tuition notebook or in school notebook you have to write A-M-M, A-N-N, A-S-S, A-T at, B-E-B, H-E-He, M-E-Me, W-E-V, I-F-If, I-N-In, I-S-Is, I-T-It, O-F-Off, O-N-On, O-R-R, G-O-Go, N-O-No, S-O-So, B-Y-By, M-Y-My, U-P-Up, U-S-Us. Okay, so these two letter words you have to read and write 5 times and very loudly you have to read it. Chalo, now we will continue second question, that is read and make words write the words in your notebook, and these words you have to also write in the notebook. For example, C-A-N can, F-A-N fan, M-A-N man. So what is given in the flower? There is dash and A-N. So what we have to do? So we have to write this C here. So C-A-N can. As they show us arrow, C-A-N can. Then F-A-N fan. So how to write this one? देखो अभी मैं यहाँ पर लिखती हूँ dash A-N. So what we will do? C-A-N can बन गया. फिर dash लिखो A-N. So in place of this what we will write? F. So F-A-N fan. Same here लिखो M. Okay, so M-A-N man. फिर M कट करो, V लिखो V-A-N van and P-A-N pan. So this way these words you have to write. Now the second flower. In the second flower what is given? That is Kangasvati. Okay, sorry. P-O-P pop, C-O-P cop, H-O-P hop, M-O-P mop, T-O-P top. Get it? So this way you have to read and write minimum 5 times. Then H-E-N hen, M-E-N men, P-E-N pen, T-E-N ten, D-E-N den. Okay. Then this flower, pink flower देखो, U-N दिया है, U-N दिया है, तो N-U-N none, R-U-N run, S-U-N sun, B-U-N bun, F-U-N fun. Now the next flower, the last one, I-N is given. So what we have to do? B-I-N bin, F-I-N fin, W-I-N win, P-I-N pin and T-I-N tin. Okay, so this way you have to read all these words and this way you have to write each word 5 times. So 2 letter words और 3 letter words का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा. और ऐसे ही आप लोगों को सारे जो साउंड्स रहते हैं उसको भी बोलना है. जैसे फोनिक साउंड रहता है ए न एन, अ प ऑप, तो सी पी अ प अ प पॉप, ऐसे. ठीक है, जो फोनिक साउंड होते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो ऐसे करना है. तो अगर पेरेंट्स सिखा रहे हैं बच्चों को तो आपको फोनिक साउंड का यूज़ भी अगर करना है तो आप कर सकते हो. या डायरेक्टली H-E-N बोलो, या H-N हैन, M-N मैन, P-N पेन, T-N टेन, D-N डैन. ऐसे भी आप बच्चों को रीड करवा सकते हो. ठीक है. ओके, सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड 1.4 लेट अस रीड. और नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करती हूँ जिसमें हम देखेंगे नेक्स्ट लेसन. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.